2019 के अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए थे मोदी सरकार ने, तो 2024 के अंतरिम बजट में भी काफी कुछ बड़ा कर सकती है मोदी सरकार। हालांकि छठी बार का कह सकते हैं बजट है, मोदी सरकार अंतरिम बजट है और छठी बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे। दूसरी ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जो आज सबसे ज्यादा बार बजट पेश करेंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था और इसके बाद अब दूसरी महिला बन जाएंगी निर्मला सीतारमण जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करेंगे। हालांकि बजट की बात करें, बजट में कौन कितनी बार कह सकते हैं बजट पेश कर चुका। सबसे पहले मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई के नाम ये रिकॉर्ड है और उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। आप सोचिए, फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो फिर उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो नंबर आता है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। तो पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है। 9 बार के बाद जब हम इधर से हटेंगे तो पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का नाम आता है, उन्होंने 8 बार बजट पेश किया। फिर उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम आता है, उन्होंने 8 बार बजट पेश किया। फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है, उन्होंने 6 बार बजट पेश किया है और अब छठी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 20 से 25 मिनट के बाद लोकसभा में निर्मला सीतारमण आज पिटारा खोलने वाली हैं। अंतरिम बजट है, निगाहें सबकी बनी हुई हैं। वित्त मंत्री का छठा बजट है, क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक चीज आप समझिए, हम 2019 के अंतरिम बजट का जिक्र कर रहे थे कि मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम जो बजट है वो तो आज पेश होने जा रहा है, लेकिन पहले कार्यकाल के अंतरिम बजट में क्या कुछ खास ऐलान हुए थे, क्या कुछ मोदी सरकार ने पिटारा खोला था, तो हम आपको एक एक तरीके से समझाते हैं कि पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए थे। पहला जो अंतरिम बजट था मोदी सरकार का, उसी में ऐलान हुआ था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। तो पहले अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी 2019 में, यानी कि पहले अंतरिम बजट में। इस योजना के तहत किसानों को अपनी खेती में मदद के लिए 4 महीने के अंतराल पर साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त यानी 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे। तो इसी से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के सेकेंड जो कार्यकाल है उसमें भी राहत कुछ मिल सकती है। लेकिन अब बजट को लेकर लगातार नजर जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बजट से जुड़ी। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मंजूरी ली है और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण के साथ वित्त मंत्रालय के जितने भी सीनियर अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक ने इस बजट को मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण आज छठी बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मंजूरी ली है और राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद कैबिनेट की बैठक हुई संसद हाल में, और संसद में जब बैठक हुई तो उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक है यानी मोदी कैबिनेट की जो बैठक है उसने भी इसको मंजूरी दे दी। तो किस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं इस बजट से कितनी कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है। महिला, युवा, गरीब, किसान आज सब पर नजरें टिकी हुई, किसका कल्याण होगा ये सवाल बना हुआ है। हालांकि इसका भी जवाब मिल जाएगा अब से 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, क्योंकि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट जो है वो पेश करेंगे और बजट के भाषण की जैसे शुरुआत होगी वैसे ही जो लाल उनके हाथ में जो कह सकते हैं डायरी है जिसमें पिटारा कह सकते हैं देश का, क्योंकि उसी में देश का बजट है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। तो टैक्स पेयर्स को भी काफी कुछ उम्मीदें हैं, काफी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। टैक्स पेयर्स उम्मीद लगाए बैठा है कि टैक्स में क्या कुछ बदलाव होगा। किसान इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या उनकी किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2019 के पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की थी और आज दूसरा उनका अंतरिम बजट है। तो उम्मीद लगाए बैठे हैं किसान कि आज कहीं ना कहीं उनकी जो 6,000 रुपए उनको साल में मिलते हैं 3 बार यानी 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। कितने बढ़ेंगे, क्या कुछ रहेगा, किसान भी नजरें बनाए बैठे हैं। हालांकि पूर्णकालिक बजट नहीं है, अंतरिम बजट है, तो बजट से ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 5 से 6 महीने का सरकार का लेखा जोखा है और जब लेखा जोखा जो है
वो किस तरीके से उसको पेश करेगी सरकार। कल प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन हुआ था, जिस तरीके से जो कार्यक्रम होना था उससे पहले, तो किस तरीके से अब लगातार सबकी नजरें बनी हुई। down to 5.9% of GDP this year, another 50 basis points to 5.4% of GDP. The second is investment-led growth. Government has done it year after year, even in the most difficult years. So another 20% increase in capex to about 12 lakh crores, spearheaded by roads and highways, railways, etc., will give a fillip to manufacturing as well, auto as well. You know, better infrastructure, lower costs, just better efficiencies. We're coming to manufacturing. You know, we are at 13 to 15% of GDP for a long time. It's important to go to 20%. Central government has done a lot. The PLI schemes on, let's say, 10 to 14 key sectors to make them champions. That's a great policy move. Can we also have PLI schemes for labor-intensive sectors like toys, like apparel, like footwear? That will get us aligned with global value chains. It's a great opportunity that will bring employment in rural India, that will bring employment to our traditional strengths. So that is something we can look at. Now, third is Industry 4.0, which is all about technology, is a reality. This is the best time to bring in young people into manufacturing. For the last 40 years, young people have not, given their bet. With technology, I think we can do it. But while it's a given, it's important that wherever we have clusters of industries, they be supported through a mechanism of Industry 4.0, because there'll be training that will be required, there'll be skilling that will be required, there'll be investment. Which way should these clusters go? A think tank in these clusters is very necessary to guide industry to go to Industry 4.0. MSMEs, they are the backbone of any industrial development. And there are major transitions taking place. Industry 4.0 I mentioned, but there's also the energy transition and the green transition. How can we enable them to go through it financially? They won't be able to afford it. It's not easy. So can there be a fund created specifically for MSMEs to help them through this green transition, be it energy, be it technology? And the second thing which has been consistent over the years, please continue to reduce the compliance burden on MSMEs. At the end of the day, they are the foundation on which industrial development rests. Coming to the auto sector, well, the more roads we build, the better it is for the auto sector, especially in rural areas. If rural incomes go up, there will be demand for the auto sector. FAME 2 expiring at the end of March, and there is conversation about. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, क्योंकि समय कम रह गया है। और उसके बाद निर्मला सीतारमण आज छठी बार बजट पेश करेंगे। निर्मला सीतारमण भी संसद भवन में इस वक्त मौजूद हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकली थी और संसद भवन पहुंची थी, जहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। बैठक में इस बजट को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इससे पहले वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची थी और द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको मंजूरी दे दी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक ने इसको हरी झंडी दे दी। तो कुल मिलाकर अब समय 15 से 20 मिनट का शेष रह गया। उसके बाद बजट पेश होना है। बजट में सबकी निगाहें बनी हुई, क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि अंतरिम बजट है, पूर्णकालिक बजट नहीं है। ज्यादा उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उम्मीदें हैं वो खत्म नहीं होती हैं। उम्मीदें तो उम्मीदें ही हैं। तो पहला जो अंतरिम बजट था साल 2019 का मोदी सरकार का, उसमें भी कई बड़े ऐलान हुए थे। इसलिए उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं कि इस अंतरिम बजट में भी कहीं ना कहीं बड़े ऐलान हो सकते हैं। आप जब 2019 में जब मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश हुआ था, उसमें क्या बड़े ऐलान हुए थे वो भी आप समझ लीजिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की उस अंतरिम बजट में, और 6,000 रुपए साल में जो किसानों को दिए जाते हैं, उसके बाद रेलवे का बजट बढ़ाया गया, युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हुए। तो इस बार भी किसान उम्मीद कर रहे हैं कि उस अंतरिम बजट में
किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, तो इस अंतरिम बजट में कहीं ना कहीं इस सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 6,000 से 9,000 होगी या 12,000 या फिर 6,000 ही रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने मंजूरी ले ली है और मंजूरी के बाद कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन में मौजूद हैं। बस इंतजार हो रहा है कि किस वक्त निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपना मोदी सरकार का कह सकते हैं अंतरिम बजट पेश करेंगे। ये छठी बार ऐसा मौका है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके इंदिरा गांधी, उन्होंने भी बजट पेश किया है। दूसरी ऐसी महिला हैं जिनके नाम रिकॉर्ड होने जा रहा है कि सबसे ज्यादा बार वो बजट आज पेश करेंगी। छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। अगर बजट पेश करने की बात की जाए, वित्त मंत्रियों की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई के नाम वो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के भी नाम है, एक रिकॉर्ड है, उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। इसके बाद यशवंत सिन्हा, उन्होंने 8 बार, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी 8 बार, और पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 6 बार बजट पेश किया है। और आज छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। चुनावी साल है, काफी कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ होने वाला है। टैक्स पेयर्स वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। चुनाव है इसलिए भी ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं ऐलान तो कुछ कर सकती है। तो इसी लाल डायरी में देश का पिटारा है, देश का बजट है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस वक्त हाथों में नजर आ रहा होगा। और वो उसकी तस्वीरें दिखाती हुई मीडिया के उन कैमरों को, क्योंकि इस पर सबकी नजर रहती है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने संसद भवन की ओर रवाना होती हैं, तो सबसे पहले फोटो सेशन का एक कार्यक्रम होता है। उसमें तमाम वो वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। जब वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से बाहर निकलती हैं, और उसके साथ साथ उनके हाथ में वो लाल डायरी होती है जिसमें देश का बजट है। तो इसी लाल डायरी के पिटारे में क्या कुछ छिपा हुआ है, क्या कुछ बड़े ऐलान होने हैं, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से ठीक थोड़ी देर बाद संसद भवन में जब इसको पेश करेंगी, वो बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी, तभी से पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ बजट में है, क्या कुछ रहने वाला है, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन उम्मीद यह है कि 2019 का जब पहला अंतरिम बजट आया था, उसको ध्यान में रखते हुए उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब हम आपको वो भी सुनवा देते हैं कि आम लोगों का क्या कहना है, आम लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं और क्या कुछ वो सोच रहे हैं कि इस बजट से क्या कुछ उनके लिए खास होने वाला है। 2019 का भी उन्होंने अंतरिम बजट देखा है, इससे पहले के भी बजट देखे हैं। अब वो ध्यान लगाए बैठे हैं कि इस दूसरे अंतरिम बजट में, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा अंतरिम बजट है, तो इसमें क्या कुछ उनके लिए खास रहने वाला है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सीधा सुनवा देते हैं और उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से। सुनिए। देखिए, एक बजट तो महिलाओं के लिए किचन से रिलेटेड होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो है एक मध्यम वर्गीय फैमिली में बच्चों की एजुकेशन है, ये सब है, तो सरकारी ही स्कूलों में ऐसी सुविधाएं क्यों ना दी जाएं कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें ही ना। तो अगर इस तरह का कुछ बजट में लाया जाए तो वो भी एक बेनिफिशियल होगा। और ये बात रही सिलेंडर की, सब्जियां, दालें, वो सब भी होनी चाहिए, कम हो तो एक फैमिली जो उसमें अपना गुजारा कर सके। मैम, अक्सर देखा जाए कि सब्जियों के दाम कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो उससे कितना असर पड़ता है आपके रसोई? देखिए, असर तो पड़ता है, कई बार टमाटर 80 रुपीज हो जाते हैं, प्याज हो जाता है, तो वो सब फर्क तो पड़ता ही है। देखिए, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा आने की उम्मीद है? उम्मीद तो है। अब देखिए, जब गवर्नमेंट बनती है उसके बाद क्या होता है, अभी तो अंतरिम बजट ही है। बजट की बात करें और महिलाओं से, क्योंकि आप लोग आज रूबरू हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तो डेली दिनचर्या की चीजें और किचन से ही शुरुआत होती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किचन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जो छोटे मतलब आप कहें गरीब परिवार कह सकते हैं हम लोग, तो उनको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाए। किचन की बातें करें, गैस सिलेंडर की बात करें, और जो हमारी दिनचर्या की चीजें हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाए, उसमें हमें रियायत मिलनी चाहिए। स्कूल फीस तो शायद सरकार के हैंड में नहीं आती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आजकल सब पढ़ाना पसंद करते हैं। सरकारी सुविधाएं तो लोगों को चाहिए, पर सरकारी स्कूल्स नहीं चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, सरकारी सुविधाएं, नौकरी सबको सरकारी चाहिए। जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं वो सबको चाहिए, हर घर में है। दुनिया आज के टाइम में इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सरकारी योजना का लाभ ना उठाया हो। पर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाना है, तो सिर्फ सरकार से उम्मीदें ये होती हैं कि जो अपने कंफर्ट के हिसाब से हो बात, सिर्फ वही करना लोग चाहते हैं।
तो आज भी वही है कि एक तो पेट्रोल पे थोड़ी रियायत हो और गैस सिलेंडर्स पे हो, किचन की और दिनचर्या की डेली की जो महिलाओं की जरूरतें हैं उसमें थोड़ी हमें रियायत मिलनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बजट में हम लोग को जैसे फ्यूल चार्जेस हैं वो अंडर जीएसटी आए, जैसे डीजल है, पीएनजी है, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट। हम लोग को जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं है, ये सब चीजें वैट के अंडर है, तो हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी में आएगा तो हम उसका बेनिफिट ले सकें। मैम अगर बात करें अगर पेट्रोल डीजल की अगर जीएसटी में लाएंगे तो कितना असर आपके कंपनी पर काफी असर आएगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग को कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है हम लोग की, तो अगर ये सब चीजें अंडर जीएसटी आएंगी तो हम लोग को एज ओवरऑल काफी इफेक्ट आएगा हमारी उस पर। नहीं, जैसे हमारी सरकार हर साल इनकम टैक्स की रिबेट में कमी छूट देती है, तो इस साल भी अब इलेक्शन है, काफी बड़ा इलेक्शन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार भी अच्छा खासा हमें बजट में छूट देगी। और मेरा सुझाव सरकार को ये है कि जो जीएसटी की दरें लगी हुई हैं प्रोडक्ट्स पे, उसको रिशफलिंग करनी चाहिए। जैसे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेरी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे गैस स्टोव है, गैस स्टोव एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, एक गरीब के घर में भी यूज होता है और सब लोग गैस यूज करते हैं, तो उस पर 18% का टैक्स है। तो वो इस तरीके से जो प्रोडक्ट, उस पर टैक्स कम होना चाहिए। 18% जीएसटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि हाई लेवल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें चलता है, मगर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर किसी को जरूरत है, गरीब को भी और हर मध्य वर्ग के आदमी को, तो उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स स्लैब कम होनी चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उन पे टैक्स स्लैब कम होना चाहिए। तो ये मेरा एक सरकार को काफी बड़ा सुझाव है। और बाकी बिजली की दरें भी इंडस्ट्रीज की थोड़ी कम होनी चाहिए, या फिर जैसे कि जो ओवर टाइम लगाते हैं, जो रात को बिजली जिसकी 24 घंटे कारखाने चलते हैं, तो रात को भी उसके अंदर हमारा टैक्स बिजली का दर हमारी कम होनी चाहिए। सरकार को इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए और कैपिटल गेन्स में भी छूट देनी चाहिए। कैपिटल गेन बहुत पड़ जाता है, जैसे कोई किसी ने प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसमें टैक्स की दर बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। अगर बात करें अगर बिजली की और बाकी केमिकल्स की जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसको आप, रॉ मटीरियल्स में बड़ी फ्लक्चुएशन है, बहुत अप डाउन आता है, उससे भी बहुत नुकसान होता है व्यापारियों को। उसमें भी सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो एमएसएमईज हैं या दूसरी भी फैक्ट्रियां हैं उनको राहत मिले। जो फ्लक्चुएशंस हैं उसमें कभी एकदम रेट बढ़ जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं, तो वो नुकसान होता है। देखिए, एक बजट तो महिलाओं के। तो अभी आप उन लोगों को सुन रहे थे जो लोग लगातार उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या कुछ खास हो सकता है। आपने उनको सुना, क्या कुछ उम्मीदें लगाए वो बैठे हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए इस बजट से, क्योंकि ये बजट पूर्णकालिक बजट नहीं है और इस बजट में सरकार का लेखा जोखा होगा, क्योंकि 5 से 6 महीने का ये बजट है। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जिन पर उम्मीदें की जा सकती हैं इस अंतरिम बजट में। मोदी सरकार उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं या फिर बड़ा ऐलान कर सकती है। पहली, किसानों के लिए बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं, 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए, तो उसको बढ़ाया जा सकता है इस अंतरिम बजट में, जो कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, जो 80C जो इनकम टैक्स की धारा है 80C, उसके तहत जो छूट दी जाती है, ईपीएफ पीएफ वगैरह जो होता है, उसमें भी उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी है वो यह है कि जो अभी तक कह सकते हैं आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा सुरक्षा कवर दिया जाता है इस योजना के तहत, उसको 10 लाख किया जा सकता है। ये 3 बड़ी ऐसी घोषणाएं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं, लेकिन होगी ये नहीं, उम्मीद ही की जा सकती है। हालांकि इसलिए उम्मीदें कर सकते हैं क्योंकि पहले अंतरिम बजट में भी हमने देखा है कुछ बड़े ऐलान हुए थे, तो इस बजट के अंतरिम बजट में भी कह सकते हैं 3 बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसानों की जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, 80C के तहत जो छूट दी जाती है टैक्स में, उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो बीमा सुरक्षा कवर जो है 5 लाख का, सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर सोनिया गांधी कांग्रेस चेयरपर्सन वहां पर पहुंची हुई थी और वो भी सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे से, क्योंकि समय खत्म हो गया है और 10:55 हो गया है। 5 मिनट के बाद कह सकते हैं बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या कुछ उस लाल डायरी के पिटारे से निकलेगा। ये बड़ी कह सकते हैं वीक ब्रेकिंग होगी जब पढ़ना बजट शुरू करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 6वीं बार आज देश का बजट पेश कर रही हैं, तो निर्मला सीतारमण से सबको उम्मीदें हैं। तो लगातार हम 3 घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े ऐलान कर सकती है मोदी सरकार। पहला ये
कि जो किसानों को 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं, 2-2 हजार करके 3 बार 4 महीने के अंतराल पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं इस अंतरिम बजट में। और दूसरा, सेक्शन 80C की जो टैक्स छूट लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, 2.5 लाख तक हो सकती है। और तीसरा, जो आयुष्मान योजना के तहत जो सुरक्षा कवर होता है 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार जो देती है, उसका दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। तो 3 ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं। इनकी उम्मीदें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब पहली बार अंतरिम बजट मोदी सरकार ने अपना पेश किया था साल 2019 में, पीयूष गोयल ने पेश किया था, तब भी यही बड़े ऐलान हुए थे। किसानों के लिए योजना आई थी किसान सम्मान निधि। तो इस बार अंतरिम बजट में उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? युवा वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस अंतरिम बजट से कि उनके लिए क्या रोजगार के पिटारा खुलेगा या फिर कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे युवा देश का लाभान्वित होगा। तो तीसरी तरफ वो लोग भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, गरीब जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। चौथी तरफ जो हमारे देश के किसान हैं वो भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो आत्मनिर्भर योजना से लेकर रेलवे का बजट तक कई बड़े ऐलान आज संभव हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम लगातार कह रहे हैं। क्योंकि ये 5 से 6 महीने का लेखा जोखा है, उसके बाद पूरा लेखा जोखा सरकार दी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जब उन्होंने संबोधित किया, मीडिया को ब्रीफ किया, तब भी उन्होंने, जब बजट सेशन कल शुरू हो रहा था, तब प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि इस बजट में कुछ खास नहीं होने वाला है, ये लेखा जोखा सरकार का है। और उन्होंने जो विरोधी दल हैं उनके सांसदों से भी अपील की थी। फिलहाल मध्यम वर्ग किसानों को लुभाने की योजनाएं आज पेश हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद बजट पेश करेंगे। और जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिकों के लिए भी कई बड़ी योजनाएं आज लॉन्च कर सकती है। घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। आज पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा घट सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बजट पेश से पहले जो उम्मीद जताई जा रही, कयास लगाए जा रहे हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, जो किसान हैं, उनको लुभाने के लिए आज बड़ी योजनाएं लॉन्च कर सकती है मोदी सरकार। क्योंकि चुनाव सर पर है, तो उससे पहले ये बजट पेश हो रहा है, अंतरिम बजट है। घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। तो अब उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों की उम्मीदें भी क्यों ना बढ़ें, चुनाव सर पर है। 2 से 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले अंतरिम बजट, तो उम्मीदें काफी कुछ बढ़ गई हैं। मध्यम वर्ग और किसानों के लिए बड़े ऐलान आज कर सकती है मोदी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आज 6ठी बार संसद में बजट पेश करेंगी, उनके नाम भी आज एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है। बजट लोगों के लिए होगा, लोगों के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रधानमंत्री हमेशा सोचते हैं कि जो अंतिम लाइन में, अंतिम कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसके लिए सोचते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास से, उसी से देखते हुए बजट आम जनता के लिए बजट होगा। कौन है? रास्ता छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने 100%। जमीन पर इतना झूठा साबित हुआ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस सत्र में भी कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं है, बहुत उम्मीद नहीं है। बाकी पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे। भाई लगाओ, लेकिन मेरे कैमरे में मत लगाओ यार। सी देखो तुमने क्या किया। तो सोनिया गांधी इस वक्त पहुंची हुई हैं संसद भवन में बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए। आपने अभी तस्वीरों में देखा, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस वक्त संसद भवन पहुंची हुई है। और तस्वीरों में आपको जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के, वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो विपक्ष के तमाम वो सांसद इस बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले कई आरोप भी लगाए हैं अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। तो इमरान प्रतापगढ़ी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। नारे खोखले हैं,
बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का दावा जो है वो जमीन पर इतना झूठा साबित हुआ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस सत्र में भी कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं है, बहुत उम्मीद नहीं है। बाकी पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे। No comment. I have no expectation. Government is not in a particularly good position, and then they will announce nothing, and then they will say that it's an interim budget. So I have no expectation. Economy is in a bad way. Unemployment and price rise are the two main problems. And what is your comment on Hemant Soren's arrest? I am disappointed. This is part of the government's effort to stifle the opposition. तो इमरान प्रतापगढ़ी को अभी आप सुन रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे कि इस बजट से खास उम्मीदें नहीं हैं और पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे उस पिटारे में क्या कुछ है। तो विपक्ष उस पिटारे पर नजर गड़ाए बैठा है कि क्या कुछ ऐलान करे मोदी सरकार और हम उस पर निशाना साधें। फिलहाल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त संसद भवन पहुंच चुकी हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंची हैं। टाइम 11 बज चुके हैं, काउंटडाउन खत्म हो चुका है। निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में बजट पेश करने वाली हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज छठी बार बजट पेश करेंगी, उनका अपना छठी बार बजट पेश करने का आज एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, क्योंकि महिलाओं के नाम दूसरी ऐसी वो महिला वित्त मंत्री होंगी जिनके नाम ये रिकॉर्ड आज लिख जाएगा। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। तो 11 बजे का समय हो चुका है और बस इंतजार खत्म हो चुका है। काउंटडाउन जो था वो पूरा हो चुका है। किसी भी क्षण वो तस्वीरें, और हम आपको सीधे संसद भवन लेकर चलेंगे जहां पर ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कुछ बोल रहे हैं और शायद कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, बजट की कार्रवाई शुरू हो गई है। ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सीधे सुनवाते हैं। प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas,
the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted
25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level.
chess prodigy and our #1 ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically,
Global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist
the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted
2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing तो निर्मला सीतारमण बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। अभी आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ साथ कई उन्होंने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 7 IIM और 7 IIT देश में बने हैं। इसके अलावा देश की वो तमाम मोदी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां वो अभी संसद भवन में रख रही हैं और लगातार बता रही हैं किस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऐलान अभी होने बाकी हैं। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी बातें अभी तक उन्होंने कही हैं वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। 10 साल में अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, यानी रोजगार को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। और सबसे बड़ा जो हमला बोला गया है इस बजट सत्र में वित्त मंत्री के भाषण से वो ये भाई भतीजावाद को 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies, and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India
at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil